Now students, you can understand what is law of supply. Now what are the assumption of law of supply? Assumption, you know, assumptions means necessary condition. जैसे हम कहते हैं मान्यताएं. What are the necessary condition of the law of supply? So I am giving you the assumption of law of supply. Assumption, you can understand necessary condition. Necessary condition for the law of supply. लॉ ऑफ सप्लाई आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जब प्राइस में ऑफ द कमोडिटी और सप्लाई ऑफ द कमोडिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, बट दिस डायरेक्ट रिलेशन कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन रेस्ट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. दैट मीन्स दे आर नोन एज द assumption of law of supply. That means there will be no change in price of related goods. Second, no change in goal of the firm. Then no change in price of factors of production. No change in technology. No change in expectation of the firm, and also no change in policy of the government. You know now, there is the policy of the government, that is taxation policy and the subsidies policy. Means there will be no change in any of the factor. Only there can be change in only there is change in own price of the commodity. Assumption of law of supply means कि law of supply can be possible only, can be applied only when rest all other factors will remain constant. जितने भी हमने आपको फैक्टर्स बताए वो सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए. कांस्टेंट मींस फिक्स होने चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. सो दैट मींस देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द फर्म, दैट इज प्राइस एक्सपेक्टेशन, and no change in the policy of the government. All the factors will remain constant. So only there will be change in own price of the commodity. Then only the law of supply will be applicable. That is when the price of the commodity increases, supply of the commodity also increases, and when the price of own commodity decreases, the supply of the commodity also decreases. So this is known as the assumption of law of supply. Now students, our next topic is exceptions to the law of supply. Next topic is exception. Exceptions to the law of supply. Exception, you know, that is these are the conditions in which the law of supply will not be applicable. ये exceptions है, exceptional cases है जो बिल्कुल अलग है. यहाँ पर इन conditions में law of supply applicable नहीं होती. लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब जस्ट लाइक कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है. इन कंडीशंस में लॉ ऑफ सप्लाई विल नहीं नॉट ऑपरेट, लॉ ऑफ सप्लाई नहीं अप्लाई होगा और इसीलिए इनको एक्सेप्शनल केसेस कहा जाता है, एक्सेप्शंस कहा जाता है. और ये एक्सेप्शंस में अपना फर्स्ट आता है एग्रीकल्चरल आउटपुट्स. एग्रीकल्चर आउटपुट, यू नो दैट students, when the price of the commodity increases, the supply of the commodity also increases. When the price of commodity decreases, supply also commodity also decreases. But in agriculture output,
if the price of the commodities increases but we are not able to increase the supply because of the production will be less, so under this condition the law of supply will not be operate.